Good morning, good morning, good morning, all of you, beta. I hope you are doing good, and I am also good. Today, we are going to start with accounting standard 19, that is accounting for leases. But before starting any session, first we will quickly revise all our accounting standards. So start with the first accounting standard, that is a disclosure of accounting policy. Second one is inventory valuation. Three is cash flow statement. This is just a revision, so I will be very quick. Number four will be contingencies and events occurring after balance sheet date. Five number is net profit or loss for the period prior period items and changes in accounting policy. Six number is removed. Seven number is construction contract. Eight number is removed. Nine number revenue recognition. 10 number property, plant and equipment. 11 number is effects of changes in foreign exchange rate. 12 number accounting for government grant. 13 number accounting for investment. 14 number accounting for amalgamation. 15 number employee benefits. 16 number borrowing cost. 17 number segment reporting. 18 number related party disclosures. 19 number accounting for leases. 20 number earning per share. 21 is consolidated financial statement. 22 accounting for taxes on income. 23 is investment in associates in consolidated financial statement. 24 discontinuing operation. 25 is interim financial reporting. 26 intangible assets. 27 is investment in joint venture. 28 is impairment of assets, and 29 is provision contingent liabilities and contingent assets. I hope you understood all accounting standards names, and today's session, I already told you that today's session is very, very important. So don't miss today's session. And many of you, beta, have problem to wake up in the early morning, and beta, I hope every one of you is attending today's session in the live only, because today's session is very, very important. That is accounting standard 19, and it's leases. Leases are divided in two parts, that is operating lease and finance lease. And why this standard is important? Let's see why this standard is important. Yesterday we left with the accounting standard 26. Say good morning in the comment section. गुड मॉर्निंग बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में. राहुल शर्मा जी, थैंक यू. गुड मॉर्निंग, लुकिंग हैंडसम एज ऑलवेज. थैंक यू बेटा. देन yes, very good morning, good morning, good morning, good morning to all of you. Sir, eagerly waiting for your session with the full of energy in the morning, first time. Yes, I think we have one more session on the Tuesday. Also in the morning one. And then in next month, I really do not have any session. I request you all to have feedback forms. Please fill up your feedback forms, which are very important one. Yes. Yes, Prince. बड़ा yesterday shirts just remove करके रखा था, तो एक ही दिन में 2 घंटे के लिए क्या नया वापस पहनने का बेटा. हाँ जी, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द S19. S19 जो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 टॉक्स अबाउट लीजेस. लीजेस है. तो व्हाई दिस स्टैंडर्ड? Why this standard? I think one more session is there on, I don't know exact day when my session is in the morning. Can you tell me? Because on 3rd of next month, 3rd November, I do not have session from 3 to 6. Why? Because बेटा थोड़ा सा फैमिली को टाइम, फैमिली टाइम है, तो इसलिए मैं नहीं रहने वाला हूँ. I won't be there. I'm going out. Yes. No, today Karthik ji, I didn't take that 5:30 ka class in the morning because back-to-back sessions are very difficult. So I have not conducted my morning session, but yes, that will be in the evening one. Chaliye. So before starting today's session, first what we have to understand, why this standard? Accounting standard 19 leases, ये क्यों है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस, ये इसके बारे में बात करेंगे. लीजेस इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ रेंट that every year you are paying year after year or month after month. That is the lease rental that we are paying. So what is the difference between rent and lease? Sir, why it is not calling as rent? Why you call it as leases? Because lease is normally non-cancelable. Lease is non-cancelable and rent is cancelable by giving 1 month ka notice. So cancelable by giving 1 month notice is a lease, and rent is rent can be cancelled by giving 1 month notice, but lease cannot be cancelled by just giving a notice, because this is a long-term agreement.
तो लीज एग्रीमेंट जो होता है बेटा, वो पहले समझ लीजिए रेंट एग्रीमेंट से थोड़ा अलग होता है. रेंट एग्रीमेंट इज डिफरेंट. इन रेंट एग्रीमेंट नाउ इट्स ऑनलाइन प्रोसेस, सो यू आर अवेयर अबाउट द रेंट एग्रीमेंट प्रोसेस. माइट बी मेनी ऑफ यू हैव सीन हाउ online registration has done for the rent agreement. So, better rent is a no cancelable agreement, but leases are normally non-cancelable agreements. Okay. So ultimately, it is an agreement between one party and another party. One is a lessor who has given you property to the lessee, and lessee is who is using that property, who has control over that property, but not the legal possession. Okay. So, legal ownership. Legal ownership is with lessor, and controlling of the asset, right to use the asset, is with lessee. So, but obvious now there are two types of lease. One, out of 10 years, 10 years may say, out of 10 years, 3 years to 4 years, life of the asset is 10 years, and you have given that asset on the lease for only 3 to 4 years. It's simply operating lease. So there are two types. One is operating, and second one is a finance. Name itself suggests you that out of 10 years, lessee is using the asset almost for 9 years. So almost the useful life, 90% of the useful life is with lessee. Okay. So asset is held by the lessee for 90% of the useful life. Okay. Here we won't say that useful life. Here it is a economic life. It is a difference between economic life and यूजफुल लाइफ. ओके. इकोनॉमिक मतलब जब तक आपको पैसा मिलेगा, when you are going to earn money out of this, is called as finance lease. So in finance lease, 90% life is covered by lessee. Okay. Lessee has that asset with himself. So the asset maximum life is with lessee. So it is like substance over form. Now, what is the difference? In case of operating lease, so it's very basic. In case of operating lease, asset will be recorded by lessor. Lessor, he is a legal owner, and legal owner is only recording the asset. Legal owner will record the asset. ये याद रखो. But in case of finance lease, lessee will record the asset. Who will record the asset? Lessee. Lessee मतलब जो asset use कर रहा है. एक बार हिंदी में समझ लेते हैं. एक बार हिंदी में. Lessor versus lessee. Leases. Leases क्या होता है? एक बार हिंदी में समझ लीजिए. लीजेस दो टाइप के होते हैं. एक ऑपरेटिंग लीज एंड सेकंड वन इज अ फाइनेंस लीज. तो ध्यान में रखना, ऑपरेटिंग लीज मतलब क्या होता है? मतलब भाड़ा, मतलब रेंट. रेंट और लीज के बीच में डिफरेंस क्या है? आपने कोई एसेट भाड़े पे दिया, तो एसेट भाड़े पे दिया तो क्या होता है? नॉर्मली ये रेंट एग्रीमेंट बनता है, और रेंट एग्रीमेंट ये कैंसलेबल होता है. रेंट एग्रीमेंट को आप कैंसिल कर सकते हो 1 महीने की नोटिस देके. चल खाली करवा दे, प्रीमाइसेस खाली करवा दे, मेरी जगह है, मैं यूज करेगा. तो ये जो होता है वो रेंट एग्रीमेंट होता है. ओके. रेंट एग्रीमेंट को दोनों पार्टीज विन विन सिचुएशन में खत्म कर देते हैं कभी. इसीलिए रेंट पे जगह लेना इज वेरी रिस्की. इसीलिए क्या होता है, नॉर्मली लीज एग्रीमेंट बनाए जाते हैं. लीज एग्रीमेंट आप लोग यदि पुणे में आओगे, तो पुणे में शॉप्स जो है, कमर्शियल प्लेसेस जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कमर्शियल प्लेसेस है, ये कमर्शियल प्लेसेस 99 इयर्स लीज पे दिए गए हैं. कितने इयर्स पे? 99 इयर्स के लीज पे. और फर्ग्यूसन रोड करके, एफसी रोड करके यहाँ पे बहुत फेमस है, प्राइम लोकेशन है. वहां के कमर्शियल प्लेसेस का अभी लीज खत्म होने को आया है. एक 4-5 साल में खत्म हो जाएगा. क्या रीजन होता है फाइनेंस लीज पे देना? फाइनेंस लीज मतलब, देखो, मैं मेरी प्रॉपर्टी लीज पे जब देता हूं तो मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा. दूसरा फायदा, मेरा जो पोता होगा, 99 मतलब पोता ही होगा ना उसके बाद, तो एटलीस्ट उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी. दादाजी ने खरीदी हुई प्रॉपर्टी
पोते को मिल जाएगी। ये 99 ईयर्स का फायदा होता है। ये उसके पीछे का गूढ़ रहस्य है कि भाई खानदानी प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसा बोला जाता है एक रोटेशन के बाद दूसरा रोटेशन और पैसा कमाता है, तीसरा रोटेशन और पैसा कमाता है, पर चौथा जो होता है ना रोटेशन, वो पैसा बेटा उड़ा देता है। ये आज तक की हिस्ट्री है कि दादाजी के पापा, अभी आप क्या बोलते हो, हम लोग उसको पंजी बोलते हैं या पंजोबा बोलते हैं मराठी में। सो उनके पास प्रॉपर्टी थी, उन्होंने वो प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी आगे आगे ट्रांसफर किया, और वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस लीज पे दे दिया और पोते के लड़के को वापस मिल जाएगा। ये उसके पीछे का लॉजिक था। ये फाइनेंस लीज में नहीं, ये नॉर्मली लीज एग्रीमेंट ऑफ 99 ईयर्स जो बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उसमें ये उसके पीछे का लॉजिक होता है। तो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज ये दो टाइप के लीज है। ऑपरेटिंग लीज इज एसेट लेसोर ही रिकॉर्ड करेगा। 10 साल लाइफ होगा तो 3 साल 4 साल ये एसेट हम लोग लीज पे दे देंगे। मैं लेसोर हूं, मेरे पास मैंने एसेट लिया है, चल ले ले, 3 साल के लिए भाड़ा मुझे मिलता रहेगा। फाइनेंस लीज में मैं क्या करता हूँ, 10 साल लाइफ है, 9 साल के लिए किसी लेसी को देता हूँ, तो मैं जस्ट फाइनेंस कर रहा हूँ। तो एसेट जितना मैक्सिमम लाइफ है, मैंने क्या किया, एसेट लिया, किसी को दे दिया, भाई ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी के साथ एसेट है, तो वो एसेट उसके पास रहेगा, तो मैंने सिर्फ फाइनेंस किया रे उसको। मेरा मकसद ये नहीं है कि उसमें से मैं रेंट कमाए। मैंने वो लोन दिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन डायरेक्टली मैंने एक एसेट के ऊपर कब्जा किया। वो कब्जा करके मैंने एसेट किसी को दिया, वही यूज करेगा, वो मुझे इंटरेस्ट देगा। सो इसीलिए वर्ड आया फाइनेंस। लॉजिक याद रखो, फाइनेंस वर्ड क्यों आया, क्योंकि एसेट, देखो कल उठ के मैंने डायरेक्टली लोन दिया तो मेरे ऊपर गिरवी कुछ भी नहीं रखा है, मैंने गिरवी कुछ भी नहीं रखा, तो मेरे पास मॉर्गेज करके कुछ तो होना चाहिए, हाइपोथिकेशन कुछ तो होना चाहिए, मेरे पास प्लेज कुछ तो होना चाहिए, मतलब मेरे पास सिक्योरिटी कुछ होना चाहिए। कल उसने मुझे लोन वापस नहीं पे किया तो मैं क्या करूंगा, वो एसेट बेच दूंगा, मेरा पैसा ले लूंगा, हजम करूंगा पैसा। एकदम सिंपल लॉजिक। सो फाइनेंस मतलब एक टाइप का गिरवी रख के सिर्फ एक एसेट इधर से उधर जा रहा है। मैंने एसेट लिया, मैंने किसी को दिया, भाई फाइनेंस वो डायरेक्टली नहीं ले सकता, इसलिए बीच में मुझे रखा, मेरे पास पैसा बहुत है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो मैंने क्या किया, एसेट लेके किसी को लीज दे दिया। आया समझ में? सो इट इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज। सो अल्टीमेटली हु हैज कंट्रोल ओवर दैट एसेट? अरे भाई लेसी हैज अ कंट्रोल, and maximum time asset is with him, so therefore he will record asset, no? Or substance over form concept, substance is important, not the legal form. Legally I am owner, but substance is the owner in case of finance lease. So lessee will record the asset in case of finance lease. Write it in the comment section. And operating lease में lessor will record the asset. So that is the basic difference between lessee and lessor. Okay, चलो ध्यान देके सुनना, lessee और lessor में क्या difference होगा। operating lease में who is going to record the asset? Lessee is going to record the asset in case of finance lease. Okay, okay sir, no problem, no problem. uh Maunig S, as non-Hindi student, I literally felt like watching the movie without subtitles. Okay, no problem. I just explained them two types of lease, in operating lease and finance lease, in Hindi. What is the logic behind it, which I explained already to you before starting the Hindi conversation. Okay. Yes, I already started. Uh yes, कार्तिक जी, कार्तिक, अरे मैं कार्तिक क्यों बोलता हूँ उसको, कार्तिक है वो। यस, कार्तिका, ऋतुराज, वेरी गुड। Many South Indian students are watching the session. Very good. And I'm explaining in two languages, one in English and one is in Hindi, because many students, they are not getting it in English. Therefore, yes, beta, I explain it in
Hindi also. So everyone is clear with the concept? Yes, I'm waiting for your comments. I'm waiting for your comments. Operating lease and finance lease. In the morning, attendance is low as compared to evening attendance. Why? And I already told you in the last session, today's session is very important one. So try to understand this session importance. Yes. बेटा लैंग्वेज कोई भी होगा तो भी आपको समझ में आएगा बिकॉज टर्म्स आर इन अल्टीमेटली इन इंग्लिश. So I don't think even if I teach in Marathi, you will understand it. बरोबर है? Okay. So my dear friends, I hope you got the concept of operating lease and finance lease. Yes. यार मॉर्निंग में 7 बजे उठ नहीं पाते हो मतलब फिर सीए काई का करने वाले हो यार तुम लोग. 5:30 बजे मैं तो आदत ही लगा दिया 5:30 को भाई लेक्चर होएगा मतलब होएगा. आदत लगाओ मत. आज फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद मेरा लेक्चर कैंसिल हुआ मॉर्निंग का. यस. No, beta, we don't consider agriculture because mines lie and land is not covered under this standard. Here we are specifically focusing on Haji asset standard. See, overview. Yes, we are going to start with the introduction part now. AS19 prescribes. What it prescribes? It is the appropriate accounting policy, but obvious RMPD analysis, recognition, measurement, presentation, and disclosure. So this is purely accounting standard. This is not a disclosure standard. Disclosure standard already covered in the chapter number 4. So chapter number 5 is purely asset-based standard. Okay, my dear. ठीक है. Disclosure. Yes, we are going to see disclosure also. Applicability, but obviously we are not going to use this as a standard that we have to see. So assets, leases other than that is a non-applicability. Leases agreement to explore for an use of natural resources. So बेटा natural resources गवर्नमेंट के साथ KGF रहे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपने यूज करने को लिया. Okay. So lease agreements to explore for an use of natural resources. So government mines hoga, rights hoga. You only got the right, but you are not covered it under S19. You have separate guidelines for that. Second one, licensing agreements for items such as motion picture films is also not covered here. Licensing agreements are S26 ray. And third one, lease agreements to use lands. Lands is also not covered here. Okay, so S19 is strictly prohibits land leases over here. So other than these assets, we are going to see in accounting standard 19. So leases other than this. समझा गया? Easy है क्या? एकदम easy. हाँ जी sir. Pradnya Patil. Sir, I am attending your first time session. And it's really awesome. Thank you, Beta Pradnya. Okay. Definition part. I request you all to share this lecture to maximum your friends. Neha is saying, sir, I do not have any friend. Yes, beta. I say is your friend only. Don't worry. चलिए. So I say तो है ना आपके साथ. Easy छे. Yes, बेटा. IFRS में थोड़ा अलग होता है. That I will teach you it in the final level. So IFRS में इंड एस में थोड़ा सा लीजेस का डेफिनेशन जो है वो थोड़ा अलग है भाई, पर अल्टीमेटली इट्स सेम बिकॉज उधर बहुत ज्यादा डिटेल में लीजेस. तो वहां पे Mr. Ramaji is very difficult in IFRS. Okay, yesterday I forgot to show you ITC ka report. Today I will show it. Land leases ka accounting is different type because land is, there is no depreciation. And land has some different type of leases agreement. So that is why it is not covered under. Yes.
Okay, accounting standard 19. Lease. What is the lease, sir? Now, what is the definition? It is a non-cancelable agreement. You can see here, agreement. It is between lessor who gives right to use the asset to leased asset to lessee. Lessee is a person who is taking that asset, who is using that asset for a period of time. Okay, it might be 10 years, 12 years, 15 years. It's not 11 months. Okay, 11 months ka why? You will understand that in income tax. Why we prepare 11 months का agreement. तो 11 months का agreement आपको income tax की faculty बता ही देगी. And for that he is paying any consideration. So consideration is paid by the lessee to lessor. Okay. चलिए. So बहुत ही easy है. Agreement है. Right to control the use of asset. तो right to control उसको दे दिया. Lessee use this asset and give us consideration. So it's very simple. You can recall this diagram in exam to write what is the lease agreement. Okay. चलिए. So the second one. What is the second one? It's non-cancelable lease. Non-cancelable lease is the cancellation only upon occurrence of some remote contingencies. Remote contingencies means lessee मर गया यार. He death of the lessee. Okay, death of the lessor. You cancel it. He's legally saying no. We don't want to continue with the lease. So beta we have to give this back with the permission of the lessor. अभी permission of the lessor. And if lessee enters into a new lease for the same or equivalent asset with the same lessor, and sometimes it may happen that lessee enters into lessor because he's finding some financial difficulties, and he may ask lessor ki please renew my lease and please reduce our lease rentals. In that case he may कैंसल द लीज. ओके, तो एक बार हिंदी में नॉन कैंसलेबल लीज होता है. नॉन कैंसलेबल लीज कुछ हुआ तो ही आप लोग कैंसिल कर सकते हो. कंटिजेंसीज केसेस में क्या होगा? लेसी मर गया भाई, क्या करेगा? लेसर तो कैंसिल ही हो गया. लेसर मर गया, वो भी हो सकता है. उसके आगे के जनरेशन बोल रहे भाई वी डोंट वांट टू कंटिन्यू, ये हमें पार्टी पापा ने कुछ भी झमेला किया है, हमें नहीं करना है. ओके. दूसरा परमिशन, लेसर की परमिशन लेके करो. तीसरा, यार लेसी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है. लेसी बोला 10 साल तक मैंने अच्छा खासा पैसा दिया आपको, 5-10 साल के लिए मैंने अच्छा खासा पैसा दिया है. अभी सर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ और आप मेरे को इतना रेंट चार्ज करोगे, 10-10% हाइक करते जा रहे हो एवरी ईयर. सर नहीं परवड़ता है. दिया ना मैंने आपको साथ. अभी मेरे भी कुछ प्रॉब्लम है. लेसी भी एग्री हुआ, लेसोर ने भी समझ लिया कि भाई ठीक है, अपना पुराना एक ह्यूमैनिटी के एंगल से कि पुराना रिलेशन है तो ठीक है, लेसी को हम लोग कम पैसा कर देंगे. लेसी ने नया एग्रीमेंट, लेसोर ने नए एग्रीमेंट्स में एंटर किया और वही एसेट को वापस लीज पे लिया. हो सकता है ऐसा, बहुत बार रियल लाइफ में होता है. रियल लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है. सो डोंट वरी, ऐसे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं. ओके. Upon a payment by issue of the additional amount such at the inception, continuation of the lease is reasonably certain. अच्छा, ठीक है. Lease term. What is lease term? Lease term is nothing but it is non-cancelable period for which lessee has agreed to take the lease on lease the asset. Okay, ठीक है. 99%. Yes, beta. Aisha, yes. Minimum lease payment. Lease is for the long period. But ultimately, if you put the condition of cancellation, it may get cancelled, though the word is lease. But according to me, it will be rent. Okay. Minimum lease payment. Now, this is very important. What is the minimum lease payment? We are going to see it in the question form. So, minimum lease payments. For example, yes, no. I will give you the example. Now, suppose Sanket sir has one asset. He has given that asset to देवराज. देवराज हमारा बंदा एक है, लेट ज्वाइन हुआ है आज. गुड मॉर्निंग अब भी डाला है इसने. तो देवराज को संकेत सर ने एक एसेट दिया. अरे वाह, ठीक है. ऑन लीज. नाउ ईयरली रेंट 50,000 रुपीज. ओके, 50,000 रुपीज.
हाँ जी मेगा, दैट इज अ डिफरेंट बेटा. Yearly rent 50,000. That is the operating lease, beta. Mega, that is the operating lease. They will treat it like rental only. Okay, chalo. Abhi concentrate. Please focus on this. Now, study part. Lease rent is 50,000. What is the lease rent? Lease rent is 50,000 per annum. Now, I entered with Devraj for 5 years agreement. Okay, 5 years ka agreement hai. 50,000 for 5 years. So 50,000 in the first year, 50,000 in the second year, 30,000, 50,000 third year, fourth year, fifth year. And at the end, Devraj gave me guarantee. He promised me, sir, I will take your property guaranteed 25,000. 25,000, I will take your property. He has given me a guarantee. Sir, I promise you, after 5 years, I'm going to take your asset back. I will take that asset at 25,000. Okay. But my expectation my expectation is not 25,000. My expectation are something more than 25,000. My expectation is 40,000. Out of that, my expectation 40,000. Someone other Devraj nahi. Aisha is telling, sir, I will give you 40,000 rupees. Okay. But let's see. Aisha is not promising me 100%. And I'm also not a greedy person. But I know my property value is not 25,000. Why I should sell it at lower price? No. Suppose if Devraj is giving me very high rent than the market rent, then I can take a decision. But Devraj is giving me a market rent. So why I should sell that property after 5 years to Devraj at 25,000 if I'm getting the opportunity to sell it at 40,000? Okay. So guaranteed, I already guarantee 25. So what is unguaranteed? Unguaranteed is 15,000. What is unguaranteed? Is 15,000. So for lessor, minimum lease payment is 50,000 into 5 years plus 40,000. Lessor will consider 40,000. No? Yes. And what about lessee? Lessee will consider 50,000 into 5 plus 25,000 because he has guaranteed only 25,000. Devraj guaranteed only 25,000. So he will consider, so minimum lease payment. For lessor, it is a different because lessor considers UGRV, unguaranteed residual value. What is RV? RV is residual value. Residual means at the end, it is called as whatever value given by the promise by the Devraj to Sanket sir is called as the residual value. एक बार हिंदी में समझ लीजिए. आप लोगों ने बेटा एक ये बना के रखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी, बट ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना. क्या है भाई ये मिनिमम लीज पेमेंट? मिनिमम लीज पेमेंट मतलब क्या? मिनिमम लीज पेमेंट दोनों के एंगल से अलग अलग होता है, याद रखो. सो दोज हु अंडरस्टूड इट बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? यस, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. दोज हु अंडरस्टूड इट, साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी आंसर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेसॉर एंड लेसीज मिनिमम लीज पेमेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेसॉर एंड लेसीज मिनिमम लीज पेमेंट? सो एक बार हिंदी में समझ लो. देखो भाई, मिनिमम लीज पेमेंट लेसॉर के लिए और लेसी के लिए अलग अलग होता है. क्यों अलग अलग होता है? देखो, एक प्रॉपर्टी है, संकेत सर ने एक एसेट दिया देवराज को कितने में दिया? ईयरली रेंट उसने लिया संकेत सर ने 50,000 रुपया महीने का, सॉरी साल भर का 50,000 रुपया, एक साल का पहला 50, दूसरे साल का 50, तीसरे साल का 50, 5 साल का एग्रीमेंट बना लिया. ओके. और देवराज बोल रहा है कि 5 साल के बाद सर ये प्रॉपर्टी मैं ही ले लेगा. कितने में ले लूंगा? 25,000 रुपीज में मैं ये प्रॉपर्टी ले लेने वाला हूं. मैंने बोला देवराज
जी 25,000 रुपीज आपने मुझे गारंटी दिया है, पर मैं हूं बेटा एक थोड़ा हावड़ा पर्सन। ओके, हावड़ा मतलब ग्रीडी, हिंद मराठी में उसको बोलते हैं हावड़ा मतलब ग्रीडी। ओके, एक हूँ लालची इंसान। तो ये क्या है, मैं बोलेगा कि नहीं भाई देवराज, मैं किसको तुझे क्यों बेचू बेटा, मैं तो बाहर बेच सकता हूँ आयशा को 40,000 में, मैं काहे को तुझे बेचू। ओके, 40,000, ये मेरे मन को प्रॉपर्टी का वैल्यू पता है, मैं उसको नहीं, देवराज को नहीं जाके बोलूंगा, नहीं तो देवराज बेटा वो भी एक सदमे में रहेगा। मैं उस टाइम पे बता दूंगा, देवराज देख 40,000 देना है तो दे, ये देख ये आयशा तू गारंटेड 25,000 दे रहा है ठीक है, पर मुझे नहीं चाहिए, मैंने तुझे रेंट पे दिया ना 5 साल के लिए 50,000, मैं तुझे नहीं देने वाला हूं। हमारे एग्रीमेंट में कोई भी रेसिडुअल वैल्यू के बारे में चर्चा नहीं हुई है, तू मुझे 25,000 गारंटेड, तूने प्रॉमिस किया, उसने लिख के दिया कि आई कैन पे यू 25,000 इफ यू सेल इट टू मी, मुझे आपने 25,000 में मैं लूंगा यदि आपने मुझे भी वो प्रॉपर्टी बेचा तो, हमारे एग्रीमेंट में है, पर ये जरूरी नहीं कि मैं आपको बेचूंगा करके, देवराज को मैं ही बेचूंगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो प्रॉपर्टी 25,000 में मैं माया रखना है, नुकसान का को करके लू, जो यदि आयशा मुझे 40,000 रुपीज दे रही है तो जीआरवी यहाँ पे 25,000 होता है, एंड यूजीआरवी यहाँ पे 15,000 होता है। यूजीआरवी क्योंकि वो आयशा इज अ थर्ड पर्सन, तो उसने मुझे दिया है, लेसर और लेसी के बीच में ये प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है। तो मिनिमम लीज पेमेंट मेरी इच्छा कितनी है, 50,000 रुपए तो मुझे 5 साल के लिए मिलेगा, तो 50,000 इंटू 5 प्लस मुझे मिलेगा 40,000, 40,000 मतलब यूजीआरवी भी कंसिडर होएगा। पर वही अपने देवराज के बुक्स में कितने का देखेगा, देवराज के बुक्स में 50,000 रुपया इंटू 5 वो तो देगा, देवराज बोलेगा भाई मैं तो 25,000 ही पे करने वाला हूं, मैंने कहा 40,000 का प्रॉमिस किया है सर, तो 25,000 ही मेरे बुक्स में दिखेगा, ये लेस्सी के बुक्स में। तो लेस्सी के बुक्स में क्या दिखेगा, यस दिमाग में बैठ गया, लेस्सी के बुक्स में 5 बार बोलना है, लेस्सी के बुक्स में मिनिमम लीज पेमेंट मतलब क्या, रेंटल प्लस जीआरवी, रेंटल प्लस जीआरवी, रेंटल प्लस जीआरवी, रेंटल प्लस जीआरवी, रेंटल प्लस जीआरवी in case of lessee. And what about lessor? Lessor will consider rental plus GRV plus UGRV. Rental plus GRV plus UGRV. So difference is UGRV. Got the concept? Yes, 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 sir. Understood the concept. Very well, very well. I understood the concept. चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोल दो भाई कि समझ में आवी गयो छे, एकदम इजी छे सर। रेंटल प्लस लेसी का पेमेंट जो होएगा प्लस लेसर का जो मन में इच्छा है यूजीआरवी छी। यस, रेसिडुअल वैल्यू इज सेम लाइक स्क्रैप वैल्यू। यस बेटा, at the end whatever amount you are giving is called as residual value. It is divided in two parts, GRV and UGRV. चलो रे भाई, जल्दी जल्दी बोलो। वेरी गुड पांडे जी। सो जीआरवी एंड यूजीआरवी जिनको समझ में आ गया बेटा उनके लिए बहुत इजी है। हाँ जी, जय पटेल, सब गुजराती बच्चों ने कमेंट दे दिया फटाफट। कोमल जैन, देन प्रियंका पांडे जी शायद से गुजराती, हार्दिक पांडे ની બેન છે, हार्दिक गरेजा, जयेश भाई, जय पटेल, वेरी गुड। guaranteed residual value is called as GRV and UGRV is unguaranteed residual value which is not given by the Devraj but it is promise which is given by the third person। हाँ जी, ओके प्रज्ञा पाटिल। yesterday I think we uploaded this notes। पार्थ राणा, હું પણ ગુજરાતી છું સુરત થી। अरे वाह पार्थ जी, क्या बात है। चलो 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 सर जल्दी बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीज पेमेंट of lessor and lessee? So minimum lease payment for lessor, it is rental plus GRV. Write down it in the comment section. No, plus UGRV. Here rental plus only GRV. Lessee के बुक्स में guaranteed residual value। अरे बोलो भाई जल्दी बोलो। Unguaranteed is
Yes, but a minimum lease payment, we are going to record it. That's why we are taking, we are considering this definition. No, we are going to see this definition. While solving problem, we need all these concepts, lessor, lessee in the books of. So these words are very important. Lease period. Then what is the guaranteed residual value? What is the unguaranteed residual value? All we are going to cover it while solving illustrations. Okay. चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी लिखो। गुंजन देवी। मॉर्निंग में आई हैव सीन योर अटेंडेंस। बिग बॉस की आय है आपके ऊपर। अटेंडेंस इज वेरी पुअर इन द मॉर्निंग। आई हैव सीन मेनी सेशंस में। अटेंडेंस इन द इवनिंग इज good normally I've seen, but in the morning session no, attendance is very poor. क्या बीमारी है क्या इंडिया में जल्दी ना उठने की? बेटा जल्दी नहीं उठोगे तो सीए कहां से होगे? आदतें लगाओ अच्छी। एसेट के बदले में एसेट, राहुल शर्मा डोंट डू सच थिंग ना बेटा। इतना इमेजिनेशन हाई मत रखो भाई राहुल। काय को इतना भारी इमेजिनेशन रख रहे हो कि मैं एसेट के बदले में एसेट लेगा? इतना कौन करे? कैश पे कर और खत्म कर। काय को इतना टेंशन ले रहा है रे? हाँ पार्थ। मुकेश यादव पूछ रहे कि सर हिंदी मीडियम के क्लासेस का नहीं चलता है क्या? सर हिंदी मीडियम के क्लासेस एक्चुअली अकाउंट्स का पेपर तो इंग्लिश में लिखना होता है शायद से। आई डोंट नो एग्जैक्टली। हिंदी में पेपर ही नहीं है अकाउंट्स का। पता नहीं है मुझे मतलब। यस तो पर मैं एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में दे ही देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोंट वरी। मोर देन 200 बेटा प्रिंस। ओके। फेयर वैल्यू पे आ जाते हैं। फेयर वैल्यू वही वो घिसी पिटी डेफिनेशन रे। Fair value is the amount for which it is exchanged, could be exchange or liability can be settled between the knowledgeable parties at arm's length price. Arm's length मतलब you can stretch it. Okay, तो for कैसा होता है? For relatives, the value can be reduced price. Okay, so fair value मतलब it's for a third person. ना बेटा आप लोगों को यदि आप मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए तो आई विल गिव यू डिस्काउंट नो। यस एक अटैचमेंट होगा। सो यू प्राइस विच इज गिवन टू यू इज नॉट एट आर्म्स लेंथ। ओके सो आर्म्स लेंथ आपने बोल दिया संकेत सर आई वाज योर स्टूडेंट फॉर फाउंडेशन और इंटर एंड बेटा यू केम विथ योर फैमिली तो बट ऑब्वियस आई विल चार्ज यू लेसर अमाउंट। तो why? Because it's not a fair value, it's not at arm's length। एक इमोशन से रे। ओके चलिए सो दिस इज वाई फेयर वैल्यू इज अ between third person means when you are selling to a third party what is the price? It's called as fair value. If you are selling that same material to your relative तो बड़ा ऑब्वियस यू विल चार्ज लेस अमाउंट। पर बेटा कुछ मारवाड़ी लोग होते हैं तो वो धंधे में व्यवहार में रिलेशंस नहीं रखते बेटा। प्योर मैंने देखे हुए ऐसे लोग। प्योर बेटा प्योर बिजनेस माइंडेड पीपल। ओके कि वो धंधे में नहीं, तू भाई भी रहेगा तो भी भाई तुझे यही पैसे में मिलेगा, ऐसे भी लोग होते हैं। तो फेयर वैल्यू उनके लिए हमेशा ही सबकी सेम ही रहती है। बट हमारे जैसे लोग हैं जो आपसे रिश्ते मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट रेसिडुअल वैल्यू। हाँ जी बेटा दीपाश्रय। यस residual value. What is the residual value? Residual value is nothing but it is the lease asset is estimated fair value of the asset at the end of the lease term. So whatever value you are giving at the end is called as residual value. तो residual value उसी को बोला जाता है रे। इकोनॉमिक लाइफ क्या है?
इकोनॉमिक, इट्स नॉट यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक मतलब पैसा, जितने साल पैसा आएगा, इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक लाइफ। ओके। अरे बेटा, मैं सब मारवाड़ियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी खुद एक बनिया टाइप का ही हूं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। देयर आर सम पीपल, देयर आर सम, यस, इट इज नॉट कि एवरीवन। हाँ। तो ऐसा कुछ आप एकदम ऐसा क्यों रहते हो रे? बिजनेस अकाउंट्स तो मेंटेन करना पड़ेगा ना बॉस। यस, मेरे बिजनेस अकाउंट्स को मैं मेंटेन करना ही पड़ता है। ये तो ऐसे कुछ भी और इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन होंगे तो बेटा मैं लिखना ही पड़ता है अपने एक नोटबुक में। हाँ जी। किसको कितना पैसा उधार दिया है लिखना तो पड़ेगा ना बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। Economic life, the period over which an asset is expected to be economically usable by one person to another person, or the number of production of similar units expected to be obtained from the asset by one or more user. It is called as economic life. Okay, so jitne saal, whatever amount you are going to receive it from the lease asset is called as amount received. Okay, useful life is a different. Sometimes your economic life may get finished before useful life, and sometimes it might be vice versa. Useful life is over but still you can derive the amount. Okay, पैसा निकाल रहे हो, एक खींचने का है पैसा, that is called as economic. Economic means money which you generate from that asset. Okay, in simple language, जितना पैसा आप वो एसेट्स में से निकाल पा रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। उसको क्या बोलते हैं भाई? इकोनॉमिक लाइफ। अरे समझे क्या मेरे दोस्तों? Useful life of leased asset. Leased asset की useful life, the period over which it is expected to use by the lessee and number of production of similar units that is obtainable from the same asset. UGRV, unguaranteed residual value. UGRV is a difference between residual value and minus guaranteed residual value. Actually, this is a difference is greater than guaranteed residual value. In that case, it is called as. Now, gross investment in lease. Gross investment means what? Gross investment means 50,000 into 5 plus 40,000. This is a gross investment. Okay. Minimum lease payment plus unguaranteed residual value. And unearned finance income is a present value ka difference hai. Now, what is present value? Yes. Wait for this two definition. I'm going to tell you. Okay. चलिए, सो टाइप्स ऑफ लीजेस। कितने टाइप के लीजेस है? टाइप्स ऑफ लीजेस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ लीजेस। ऑपरेटिंग लीज, आई ऑलरेडी टोल्ड, नो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। रिस्क, नाउ व्हाट इज द रिस्क? रिस्क इज asset is getting damaged. Risk and rewards, rewards means whatever benefits you are taking from that asset are not transferred to lessee, does not transfer substantially risk and rewards. Okay, रिस्क वो खुद के पास रखेगा और रिवॉर्ड्स भी उसी के पास। एंड व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंस लीज। सो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में यही डिफरेंस है। फाइनेंस लीज में risk and rewards are transferred to lessee. Now, whatever happens with the asset, we are not going to maintain it. It's your decision. Yes. So, in case of finance lease, so operating lease में क्या होता है? Risk and returns. ये दोनों भी रिस्क मतलब क्या है भाई? एसेट डैमेज होने की रिस्क है, एसेट का मेंटेनेंस का रिस्क है। कल उठ के एसेट वो बहुत ही खराब कर देगा तो भाई क्या करेंगे? मेंटेनेंस का एग्रीमेंट हमने बनाया हुआ है, पर एसेट ही इतना खराब हो गया, वो बोलेगा कि भाई मैं कुछ नहीं करके देगा, ये एसेट ऐसी थी। तो वो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑपरेटिंग लीज में वो होता है। फाइनेंस लीज में बोलेगा भाई तेरी एसेट है, तेरे पास ही रखनी है, मैं क्या करूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तुझे ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर कर देते हो तो उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड। Okay, write down it in the comment section. What is the difference between operating lease and finance lease? Yes, write down it in the comment section. Fatafat. What is the difference between operating lease and finance lease? चलो 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 चलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। चलो लिखो लिखो लिखो, फटाफट फटाफट लिखो बेटा, लिखा तो समझेगा।
यस, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो सीखोगे। चलो जल्दी से राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट लिखना है, फटाफट। ऑपरेटिंग लीज वर्सेस फाइनेंस लीज सर। मेरा लीज ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स नहीं होता है, वो रेंट होता है भाई। चलो। हाँ जी सर, ओवर सर। नाउ व्हाट आर इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज? डिटर्मिनिस्टिक कंडीशंस मतलब कंपल्सरी। ओके, डिटर्मिनेशन। और वन इज, यस, ये देखो एक डिटर्मिनेशन है और एक सजेस्टिव कंडीशन है। डिटर्मिनिस्टिक एंड सजेस्टिव, अरे वाह मेरे शेर लोग, क्या बात है। यस, वेरी गुड। Deterministic conditions and suggestive conditions. So how to decide whether it is the finance lease or whether this is the operating lease? So first question is that. See, first one. The lessor transfers. यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा नहीं, सो मैं स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। यस, जूम कर देता हूँ मैं। मैक्सिमम व्यू पे चला जाता हूँ। अरे वर्ल्ड कप का बात है, हाँ। मैक्स व्यू, आप मेरे वीडियो को मैक्स व्यू पे देख सकते हो। ओके, चलिए। सो डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन, मैक्सिमम व्यू पे आ गया मैं। तो यहां पे लेसॉर ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म्स। ओके, फाइनेंस लीज का पहला इंडिकेटर, फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंस लीज, व्हाट इज द इंडिकेटर? एट द एंड ऑफ द टर्म, लेसॉर promises lessee that asset is with you. Yes, asset I'm going to give it to you only. Yes, this is a term. So this is what the finance lease. So it is an indicator. At the lease term jab end hoga, then transfer of ownership. Okay. The lessee has option to purchase the asset at a price lower than the fair value, sir. Fair value say एसेट को प्राइस लोअर पे लेना जरूरी है, प्राइस लोअर देन दी फेयर वैल्यू। सो फेयर वैल्यू इन द मार्केट 50,000, बट वी आर गिविंग टू लेसी एट 20,000 itself. सो सेकंड वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस लोअर एंड पे, परचेस एट लोअर प्राइस देन द मार्केट वैल्यू. The lease term is a major part of economic life. Major part of economic life. Yes. The asset, even if the title is not transferred. So major economic life, I already told you, out of 10 years, 9 years asset is, let's see, major part of economic life. Economic, not useful. Huh? In this standard, we are not using useful. Useful we used in the property, plant, equipment and intangible assets. Here we are using the word economic. Economic. जब पैसा मिलता है, गांधी जी आने का टाइम इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक लाइफ. यूजफुल, गांधी जी आए या ना आए, हम लोग एसेट को यूज कर रहे हैं. यस, तो पैसा आया तो इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक लाइफ. पैसा जितने साल मिलेगा, यूजफुल लाइफ जितने साल आप एसेट को यूज करोगे. सो डिफरेंस बिटवीन यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ. At the inception of the lease. Now this is, you will understand only by solving questions. Okay, present value of the minimum lease payment, you won't understand it now. So present value of minimum lease payment is substantially covers fair value, substantially cover. The asset is of specialized nature. So asset ऐसे nature का है that will be used only by the
लेसी, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार, by heart points. All these 5 points are by heart. Chalo, write down it in the comment section. Fatafat, fatafat. Only keywords you can write it, so you can recall it afterwards. Chalo, I am giving you 3 minutes to write this in the comment section. Chalo, chalo, chalo. In comment section, write down, write down. Yes, don't say no every time, बेटा. Don't say no. तो देखो, एक बार हिंदी में बता देता हूँ. देखो, ओनरशिप जो है वो एंड में हम लोग किसको ट्रांसफर कर देंगे, तो लेसी को ट्रांसफर कर देंगे. लेसी ले भाई, तेरी ही एसेट है, तेरे पास ही रख, तेरी अमानत तेरे पास ही होगी. जो हम लोग लेसी को प्राइस देने वाले हैं, मतलब लेसर जो है वो लेसर बोलेगा लेसी एक काम कर भाई, ये कम से कम पैसों में लेके जा ये एसेट को. मेजर पार्ट 10 साल में से 9 साल तो भाई लेसी के पास ही एसेट है, जब तक गांधी जी आ रहे थे. इकोनॉमिक लाइफ, ये आपको नहीं समझेगा, ये मैं आपको प्रॉब्लम के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट, ये फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के साथ कवर कर रहा है. अब ये क्या होता है, इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा सर. एंड लास्ट वन इज अ स्पेशलाइज नेचर का एसेट है. स्पेशलाइज नेचर का एसेट जहां पे एसेट का यूज इज ओनली उसी लिए होने वाला है. ये ध्यान में रखो कि ये हम लोगों ने लेसी के लिए तो बनाया हुआ है ये एसेट. वो बोलेगा उसी हिसाब से हमने बना के दिया एसेट, तो हम लोग सिर्फ फाइनेंस कर रहे थे. चलो लिखो लिखो लिखो.
यस बेटा, ओवर। हैव यू डन बेटा? सबसे पहले किसने लिखा है देखो, सबसे पहले तेज लिखा है। ऑल पॉइंट्स। पाथ राणा, स्वरूप साई जी, दिव्या कुमारी, वेरी गुड। राजलक्ष्मी, रमा लक्ष्मी सॉरी, अश्विनी, जेनिफर, वेरी गुड बेटा। जय पटेल बहन, योगिनी, अंजना जी, स्वाति पांडे जी। फोर्थ पॉइंट का एग्जाम्पल बेटा आई विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स, डोंट वरी। मालविका, वेरी गुड वेरी गुड, एवरीवन हैज रिटन। चलिए, सो suggestive conditions. Now, what are suggestive conditions? If lessor cancels the lease, lessee cancels the lease, sorry. If lessee can cancel the lease, but he has to borne all losses. Losses borne करने पड़ेंगे भाई. If gains or losses from the, if gains or losses from the fluctuations in the residual value accrue to the lessee. Okay, so any fluctuations that will give benefit to lessee only. And if the lessee can continue the lease in the secondary period, so he will get at lower than the market rent. Okay, so rent will be very low beta. Rent will be very low in the market rent say. Okay, so suggestive conditions are different one. So suggestive conditions say. So this is also Rattamar. Suggestive conditions and deterministic. Okay, deterministic and suggestive conditions. तो ये आपको ध्यान में आया होगा? यस, आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको. What is the difference between suggestive conditions and deterministic conditions? So deterministic condition and suggestive condition are very very easy sir, very easy. अरे हाँ या ना? चलो, accounting treatment. Accounting treatment is very simple beta. Before break we are going to see this. I am going to give you break में थोड़ा सा होमवर्क. सो 8 o'clock को ब्रेक 8, 5, 8, 10 तक दे दूंगा मैं आपको. बट ब्रेक के पहले you should understand entries first. Okay, so we are at the end of this session. Over beta. Now it is only finance lease and operating lease that you have to understand in this. And question solving थोड़ा सा difficult है. जो I need ये calci चाहिए मुझे अच्छा वाला. That is after break. Initial recognition. What is the initial recognition? Asset. Okay, books of lessee. See, books of lessee, he will record the asset. Asset account debit, lower of fair value or present value of minimum lease payment, which you won't understand now, to lessor account. Lessor, why asset comes in case of finance lease, and lessor is a creditor. Yes, don't write it, just try to understand. And after giving example, you will find it very simple. Subsequent recognition, subsequent depreciation entry, because asset is recorded by lessee, so he will record the depreciation. Expenses, finance charges means interest. Interest is expenditure to lessor. Lessor is a creditor. And then lessor account debit to bank. Lessor becomes receiver to bank. And we will pay him not only principal amount, but also interest amount. So thoda part of principal and thoda interest. Yes, you will understand it. Don't worry. I'm going to take this problem, but you should know what are the entries. So asset account debit to lessor, subsequent recognition, depreciation to accumulated depreciation, finance charges to lessor, and lessor to bank. In case of books of lessor, lessee account debit to asset. Lessee is the debtor, asset goes out, and he will record bank account debit to lessee to interest income. So it's very simple. And subsequent recognition and initial is like rental. Rent account debit to lessor and lessor account debit to bank. Very simple. And lessee record karega lessee account debit to lease rental in the books of lessor, bank to lessee, lease rental to P&L. So बहुत simple है in case of operating lease. So we will solve some problems after. Beta, we solve one problem first. Can I take first problem? हाँ जी बेटा, पहले प्रॉब्लम्स लेते हैं फिर वापस एंट्रीज बताता हूँ. डोंट वरी,
एंट्रीज आई विल टेल यू आफ्टर प्रॉब्लम्स. एक प्रॉब्लम ले लेता हूं एंड आफ्टर दिस वी विल गिव अ ब्रेक. ओके, इलस्ट्रेशन 1, एग्जांपल 1 पे आ जाइए. यस, एग्जांपल 1. एंट्रीज, डोंट वरी बेटा, I will teach you each and every entry in detail after taking some examples. After taking examples, एक क्वेश्चन है, 15 से 20 मिनट जाएगा अपना. Now you are already aware about these wordings. Wordings को है. Yes, say yes. Examples के साथ शुरुआत करेंगे आज की. हाँ जी सर. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. मस्त एग्जाम्पल है. Annual lease rental. Direct entry students. Today we are going to understand some part of financial management. आज आपको financial management भी देखना है. Okay, some part of the financial management. We are going to see some illustrations, examples, and you will love these examples. I promise you. Annual lease rents 50,000 at the end of each year. Each year 50,000 for next 5 years. So beta, see, year, $50,000, 1, 2, 3, 4, and 5. $50,000. GRV is 25,000. And UGRV is 15,000. UGRV is 15,000, which you will get at the end of 5th year. And fair value is 2 lakhs. Fair value is in the year 0. Now see beta, you are getting 50,000 at the end of first year. You are getting 50,000 at the end of second year. You are getting 50,000 at the end of third year, fourth year, and fifth year. And at the end of the fifth year, you are getting 25,000 and 15,000 respectively, which is called as residual value. Sir, what is the interest rate that lessee is charging, lessor is charging? Interest rate, when we have to calculate, lessee, if buys asset today, 2 lakhs rupees he has to pay. Okay, from the open market. This is the open market value. This is called as open market value, but in the year 0. But lessee does not have money. Therefore, he has taken the asset on lease. इसीलिए उसने एसेट क्या किया बेटा? लीज पे लिया. एसेट को लिया लीज पे. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अरे हाँ या ना बोलो ना. हाँ या ना बोलो थोड़ा. हाँ सर, एसेट को लीज पे लिया. यस, टिल नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू मतलब आज की वैल्यू. आज की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपया. पर उसके पास जेब में नहीं है पैसा, इसलिए वो क्या किया? लेसी गया लेसोर के पास. लेसोर एक काम करो, ये फाइनेंस लीज है, प्योर फाइनेंस लीज. मेरे पास एसेट के लिए देने के लिए पैसा नहीं है. एक काम करो, मैं एवरी ईयर आपको 50,000 रुपए दूंगा 5 साल तक, 2.5 लाख रुपया, प्लस GRV 25,000 दूंगा. वो बोला यार तेरे को क्यों बेचना है, मैं बाहर बेचेगा तो 40,000 तो आने वाला है,
तो लेसर बोलेगा मुझे 540 मिलेगा, कितना, सॉरी 290 मिलेगा, बट बट आज मुझे 2 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे हर साल 50 मिलेगा, ऐसा देखने गए तो 2,90,000। अरे पर रुको, so first we have to give what is the interest rate. So as a chartered accountant, you have to tell to your client what is the interest rate you are getting. Yes, how to calculate? How to calculate interest rate? That we are going to see now. This interest rate calculation is called as implicit rate of return as per AS 19. एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको ही बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। दोनों भी बोलेंगे IRR। अकाउंट्स में इम्प्लिसिट रेट, द वर्ड इज सेम, द कैलकुलेशन इज सेम, इम्प्लिसिट in S19, and in financial management it is called as internal rate of return. What it called as internal rate of return. What it called as internal rate of return. Oh ho. Understood, sir. Concept is very easy, sir. Concept is very easy. We are going to calculate internal rate of return. Anyone has idea? Anyone has idea how to calculate internal rate of return? Yes or no? Tell me it in comment section. अरे भाई बोलो जल्दी जल्दी, हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अरे चाय आ गया मेरा, जल्दी जल्दी बोलिए। एनीवन हैज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट सर? मजा आएगा अभी, अभी मजा आने वाला है। नाउ एक्चुअल स्टैंडर्ड स्टार्ट्स। बोलो 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 बोलो, यस फटाफट बोलो फटाफट। हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? एनीवन हैज आइडिया? बड़ा 2.5 घंटा मोटिवेशन रखना इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग पूरा मूवी नहीं दे सकते, तो लेक्चर कहाँ से? बेटा मैं तो जाता हूँ, मूवी 3 घंटे का मूवी है, जवान मूवी, जब मेन क्रक्स आया दीपिका ही, बेटा मैं सो गया। अभी क्या बताऊँ, मूवी मतलब मेरा एक इक्वेशन ही बन गया है मूवी में जाके सोने का, 3 आवर्स में से नहीं देख पाता हूँ। तो मैं आपसे बेटा लेक्चर कैसे एक्सपेक्ट करूँ रे कि आप 2.5 घंटा बैठोगे? कितना जुलुम करते हो सर। 2.5 आवर्स पूरा टाइम बिठा के रखते हो, बीच बीच में इसलिए एंटरटेन करना पड़ता है। यस, इसलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्लस थ्योरी मिक्स करवाना पड़ता है। नो आइडिया सर, नो आइडिया। ओके, माय फाउंडेशन स्टूडेंट्स, एनीवन हैज आइडिया? So what we are going to see here, we are going to calculate interest rate calculation. And what is it called as? It is called as internal rate of return and implicit rate of return. Oh, hey, Swati, very good, my dear. Yes. अरे वाह जय पटेल। ओके, क्या होता है बेटा? बोर्ड ऑफ स्टडीज इज अ यू नो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, सो very serious lectures are expected from the faculty, and I'm also taking it very seriously, but sometimes but I make some fun also. Why? Very important, because I know it's very difficult to sit for one place for 2 hours. If I can't sit, then how can I you know force anyone to sit for more than 2 hours? तो इसलिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहता है। मिस्टर प्रिंस, एटलीस्ट यू एंटरटेन, बट अदर फैकल्टीज वोंट डू। बेटा सीनियर फैकल्टीज है, बोल नहीं सकते ऐसा। मैं एक ऐसा मिडल एज में हूं ना, एकदम सीनियर ना एकदम जूनियर। ओके, थोड़ा बहुत चलता है। आई हैव सीन सच फैकल्टीज ऑन बेटा यूट्यूब, बाप रे बाप, जाने दो, सीए कोर्स का मजाक बना के रखा है उन्होंने। हाँ जी,
एंड स्टूडेंट्स आर लाइकिंग दिस टाइप ऑफ फैकल्टीज, मतलब जो एकदम मजाक में ही पूरा, मतलब कुछ भी 2+2 ही सिखाते हैं, एग्जाम में आएगा 24/7 एंड दे टीच 2+2 एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो लव देम, ओ 2+2 इज वेरी इजी। हाँ, बी प्लीज कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट लेवल। आई ऑलवेज टेल टू माई स्टूडेंट्स कि आपको है ना आपके कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। भाई सीए कोर्स कर रहा है, आप सपोज सो एक जिम लगाए, एक एग्जांपल, दोज हु जॉइन जिम, यू टेल मी, दोज हु वांट टू बिल्ड देयर मसल्स एंड दोज हु ऑलरेडी बिल्ड अप देयर मसल्स, टेल मी, आपने जब तक खुद को तोड़ा नहीं तो फिर बनाया कहां से? जब तक खुद को तोड़ोगे नहीं तो कहां से बनाओगे? ओके, तो यस, यही जिम का जो सत्य है कि हम लोग नहीं तो क्या एकदम जाके 5 kgs का डंबल उठाओ, उसमें क्या बड़ा मजा आने वाला है बेटा? जब 15-20 किलो का मारेगा तो मजा आएगा। हाँ जी, तो ये ध्यान में रख। तो सीए का भी वैसा ही है, 2+2 मत सीख, सीखना है तो 24/7 सीख। हाँ जी, वो आएगा तो मजा आएगा फिर। चलो, अगेन फोकस, अगेन फोकस, चलिए चलिए चलिए। देखिए, when we are not aware about the interest rate is missing in the question and we have to calculate. When we calculate, बद्दू आगे चलो, yes, internal rate of return, when we want to calculate, we take some guess rate. अभी गेस रेट सर कहां से उठाते? इज वेरी सिंपल, टेल मी हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू वन सिंपल कैलकुलेशन, हाउ मच अमाउंट एज अ लेसर यू आर गोइंग टू रिसीव, टेल मी इट इन यूर टोटल 5 years, हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव? चलो बताओ बताओ बताओ, ऑलरेडी आंसर्ड इट, यस, कितना मिलेगा? चलो बोलो 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 बोलो। वेरी गुड दिव्या जी, बोलो जल्दी से, गेस रेट कई है? वाह माधव, आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी, nowadays you are not attending live sessions, huh? Okay, the correct answer is 2,90,000. How 2,90,000? Because 50,000 for 5 years. So 250 plus guaranteed plus unguaranteed residual value. I am going to receive 2,90,000. And how much I am? Uh, yes, beta. I am buying the asset at 2 lakhs rupees. Okay. So if I am a finance lease का lessor, so 2 lakhs rupees मेरे जेब से जाएगा, 2,90,000 rupees मेरे जेब में आएगा. So my outflow is 2 lakhs, my inflow is 2,90,000. So I earned 90,000. This is called as unearned finance income. What is called as unearned finance income? 90,000. In how many years, beta? You are receiving this in mota moti. This is beta approximate. This is not actual. Huh? So I'm earning 14,000 every year. Sorry, 18,000. What you are doing here? Calculation mistakes. 18,000 every year. 90,000 I'm earning in 5 years. So mota moti, approximately, I am earning 18,000 per year. 18,000 per year. Okay, per annum. So per annum 18,000. For that, I have invested 2 lakhs. So what is my interest rate? Mota moti interest rate 9%. It is more than 9%, but mota moti it's a 9%. So guess rate will be 10%. You got the concept how to calculate, how to guess the rate. Guess rate is 290 minus 2 lakhs. So you are getting 90,000 in 5 years, 18,000 per annum. 18,000 and for that you invested 2 lakhs rupees. So mota moti 9%, 18,000 into or divided by 2 lakhs. 18,000 divided by you invested 2 lakhs. So you are getting every year 9% per annum. So your guess rate will be 10% per annum. अरे मोटा मोटी कितना है बोल रही?
चलो 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 चलो, बोलो जल्दी। हाँ जी सर। गेस रेट समझ में आया? सो टिल नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज गेस रेट, एवरीवन. So I will move to next concept. So first thing, in the IRR calculation, you have to decide guess rate. Everyone is very clear with the concept? Yes. If you have any difficulty, हाँ जी. पार्थ राणा जी, पार्थ राणा को मस्त वर्ड आया. यस बेटा, साउथ इंडियन स्टूडेंट, मोटा मोटी मीन्स अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली, इट इज मोटा मोटी. इट्स नॉट एक्चुअल, इट इज अप्रोक्स. एंड हिंदी में हम लोग उसको बोलेंगे मोटा मोटी. है भाई. बेटा 9% से ज्यादा ही आएगा ना. हाँ, वाई आई एम टेकिंग 10%? वेट वेट वेट, आई विल टेल यू. 9% नहीं लेना है, बिकॉज 9% इज अ मोटा मोटी रेट. एंड यूर रेट, गेस रेट विल बी मोर देन, एंड राउंडिंग ऑफ कर दिया नेक्स्ट इस पे 10%. यस. ये सृष्टि क्या है रे बेटा? सृष्टि कितना सिंपल है रे बेटा. 2 लाख रुपया तूने इन्वेस्ट किया था, 2,90,000 तुझे मिला. तो तुझे साल भर में 5 साल में 90,000 मिला. 5 साल में 90,000 मिला तो 5 साल में कितना? 5 साल में 90 मतलब 1 साल में 18. 1 साल में 18 मतलब 18,000 डिवाइड बाय 2 लाख. 2 लाख रुपया तूने इन्वेस्ट किया था, 18,000 रुपए तुझे हर साल मिल रहा है. तो बेटा एक साल में कितना परसेंट मिला? 9%. और 9% के आसपास का रेट तुझे गेस करना है, तो तू राउंडिंग ऑफ कर लेने बेटा, देन ना मल्टीपल में ले ले. तो 9% के बदले में कितना लईश? 10%. तो यू कंसिडर 10%. ओके, एकदम इजी. हाउ यू आर गेटिंग सृष्टि? अरे क्या कर रही है बेटा? अरे कुछ भी लो, 9% लो, 8% लो, 10. गेस रेट यू कैन स्टार्ट विथ 9%. आई विल स्टार्ट विथ 10%. गेस इज एनीथिंग बेटा. यू अंडरस्टूड ना गेस रेट क्या करना है? ऐसा नहीं करते बेटा. सृष्टि, थोड़ा सा समझ के करते बेटा. चलो, अभी देखो. नाउ 50,000 आई एम रिसीविंग. In financial management, there is one concept which is called as discounting factor. Yes, direct entry students, try to understand what is discounting factor. Yes, I will teach you, beta. Foundation students already, beta, they understood at the foundation level. In mathematics, they already covered this discounting factor and all. Today, I'm going to give you the guidance about how to calculate the discounting factor. Okay, discounting is nothing but divide. Divide. Discounting means what? Discounting, direct entry students, divide. अरे 290,000 कैसे आया क्या बेटा? एकदम सिंपल है ना. 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 2,50,000 हुआ. प्लस मुझे मिलेगा जीआरबी प्लस यूजीआरबी. जीआरबी प्लस यूजीआरबी मतलब 25 प्लस 15. तो एट द एंड मुझे कितना रुपया मिला? 2,90,000 रुपया. 5 साल में मैंने इतना कमाया, और उसके लिए मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ? 2 लाख. अभी जीरो को जीरो, जीरो को जीरो, जीरो को जीरो, जीरो को जीरो, 9 - 0 0, 2 - 2 0, तो 90,000 हुआ ना रे. 9 - 0 9, एंड 2 - 2 0. तो 90,000. 90,000 5 साल में, कब से मैं बता रहा हूँ, 90,000 5 साल में कमाया. तो एक साल में कितना कमाया? 18,000. 2 लाख में 18,000. ये मोटा मोटी चल रहा है. सिंपल कैलकुलेशन है ना बेटा. क्यों ऐसा बार बार पूछ रहे हो कि 90,000 कहां से आया? थोड़ा सा तो मैथ्स आपको बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा, नॉलेज ऑफ मैथ्स. आई कैन नॉट हेल्प यू इन एवरी टाइम. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैथमेटिक्स ओनली. थोड़ा सा अभी तो समझा क्या? नहीं समझा? 90,000 कहां से आया? 10 बार आपने ये किया. चलो, कोई बात नहीं. गुस्सा नहीं हो रहा हूं, पर एटलीस्ट अभी थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, नहीं तो हम लोग. डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर्मूला. यस. सी, दिस इज हाउ टू डिस्काउंट. सी, इन मैथ्स, फ्यूचर वैल्यू, व्हाट इज एफवी? एफवी मींस फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू मतलब वॉट एवर यू इन्वेस्टेड टूडे,
you will get it after 1 year, 1 plus r raised to n. This is how calculated, brother. This is a basic formula. I will prove this formula is a correct one. Okay, I will prove this formula is a correct one. हाँ जी. So this is FM का basic formula. अभी कौन बंदा है रे 2 लाख कैसे लिए पूछ रहा है. अभी मैं आई वोंट टेक योर नेम. 2 लाख बेटा मार्केट में जाके आपने एसेट खरीदा तो ये 2 लाख आया था. प्रेजेंट वैल्यू मार्केट में खरीदने गए फेयर वैल्यू आज 0 ईयर में. इफ आई परचेस दैट एसेट आई विल परचेस इट एट 2 lakhs. 2 lakhs कहां से आया. नहीं, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 2 lakhs. फोकस नहीं है आपका, फोकस. दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग दिस प्रॉब्लम. चलो कोई बात नहीं. फ्यूचर वैल्यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ग्रास्पिंग बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को. हाँ, नाउ हाउ प्रूव दिस. Suppose if I invest today 100 rupees. Okay, 100 rupees I invested. After 1 year at the rate of 10%, how much I am going to receive? 110. How much I am going to receive? 110. Then but I will reinvest not 100. I will reinvest compounding interest. I will reinvest 110 at the rate of 10%. So I will get 11 rupees. So this is 121. Then again, I will invest this 121 at 10%. So I will get 12.1 interest. So 12.1 matlab 133. No, it is correct na? हाँ, 133.1 after 3 years. So year 1 में इतना, year 2 में इतना, year 3 में इतना. Let's prove this. 100 rupees I invested. 1 plus R. R is a 10%. R is a 10%. 10% मतलब 0.1. 0.1 raised to 3. Take on calci. Take on calci. How to calculate it? 1.1 into is equal to only 2 times. If raised to 3, here you will consider only 2 times. Okay. 1.1 into is equal to I am getting 1.331 into 100. Yes. So this works. This works. If you consider only 2 years, 1.1 into is equal to 1 time only into 100. Yes, it works. 121. And 100 into 1.1 is 110. So this formula works better. Future value is equal to present value into 1 plus R raised to n. Direct entry students. Yes. 100 I invest today. After 1 year, I will get 110. After 2 years, I will get 121. After 3 years, I'm getting 133.31. If I invest at the 10% rate. And 10% means R kitna loge? R you will consider 0.1. So 1 plus 0.1. 1 plus 0.1. 1 plus 0.1. हाँ जी. 133.1. Okay. मैथमेटिक्स है बेटा, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है इफ यू डोंट आंसर मैथमेटिक्स का वे. हाँ, सो यस सृष्टि, आई होप यू अंडरस्टूड इट. सृष्टि, फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन. प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन. प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन. ओके, चलो. सो दिस इज द फॉर्मूला. सो हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू. हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. देन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन. Okay, you can do backward calculation. Future value से present value. For example, after 1 year, you are getting 110. Okay, so 1 plus R. R is 0.1 raised to 1 after 1 year. So what is the present value? 110 divided by 1.1. You will get 100 rupees. कितना मिलेगा? 100 rupees. This is very simple. 110 divided by 1.1. 100 rupees. Okay, so my dear friends,
This formula works. Now, same thing. 50,000 I'm getting after 1 year. 50,000 I'm getting after 2 years. Today's value, today's value, today's value at the rate of 10%. So take on calci. क्या करोगे? 50,000 for 1 year, 1.1 raised to, guess rate is 10%. 50,000 divided by 1.1 raised to 1. Then again 50,000 divided by 1.1 raised to 2. Then 50,000 divided by 1.1 raised to 3. Then again 50,000 divided by 1.1 raised to 4. And then again, yes, direct entry students, you can do this for 5 years. You are getting 50,000 at the end of first year. Today's value is less. Less matlab divide karna hai. So divide it, again divide it, again divide it, again divide it for 5 times. So first try to understand the long cut. So 50,000 divided by 1.1. What is the answer? 45454.55. Again, if you do yes, 41,322.31. Again is equal to Kia. So 37 on calci, 565.74. Again is equal to, and again is equal to, and if I take a total of this, take a calci pe total, 322.31, 37, 565.74. I'm getting the answer 468,959. कुछ तो गड़बड़ हुआ. 45454, 41,322 plus 31,150 plus 31,046. 189,537. Okay, what I am getting the total? 189. Okay. Shortcut. 1 divided by 1.1 is equal to m plus 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 for 5 times. 5 years, therefore 5 times. Okay. Then memory recall into 50,000. Okay. See, हमने common निकाला 50,000 and 1 divided by 1.1 plus 1.1 raised to 2 plus 3 plus 4 plus 5 ऐसा करेंगे. चलो लो कैलसी पे 1 divided by 1.1 is equal to m plus 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 is equal to m plus. Memory recall 3.7907 into 50,000. So answer is 189,539. 189,539. Okay. So this is a calci shortcut. You can take on calci. 1 divided, please don't use Casio calcia. 1 divided by 1.1. Take on calci 1 divided by 1.1 is equal to m plus 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 is equal to m plus. Memory recall 2 times dabao. MRC 2 times into 50,000. 189,539. Are you getting the same answer? Okay. Yes. So this is a shortcut of calci. But I can't give you break now. I will teach first full discounting factor and then only I can give you break.
ब्रेक नहीं मिलेगा अभी. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी नाउ एवरीवन, year 1-5, what is cash flow? Cash flow is every year 50,000. Every year 50,000 and discounting factor I will take. And at the end of the fifth year, 1-5 means 50,000 every year. 1-5 means first year 50, second year 50, third year 50. That is 1-5. Okay. And in the fifth year, you are getting 40,000. GRV plus UGR. Discounting factor how to calculate? 1 divided by 1.1, 1-5. तो कैसे करोगे? 1 divided by 1.1 is equal to m plus 5 times. And memory recall. 1 divided by 1.1 is equal to m plus 4, 5. And memory recall 3.7908. And fifth year only. So fifth year, 1 divided by 1.1 is equal to 5 times. Not memory plus. Huh? 1 divided by 1.1. 1, 2, 3, 4, 5. 0.6209. 0.6209. Okay. So discounted cash flow. So discounted cash flow 50,000 into 3.7908 is 189,540, and 40,000 into 0.6209, 24,836. 24,836. So I'm getting the total 2,14,376, and I want 2 lakhs. I want 2 lakhs. 2 लाख रुपया चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लाख रुपीज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? लेट्स सी. तो हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर कम करना पड़ेगा. I want less answer. Sorry, I want to increase discounting factor, and you will solve it now by 15% in break. Okay. So अभी break देता हूं. यहां पे हमारा खत्म हुआ. So direct entry student, don't worry. Watch this session once again. This calculation. So 50,000 you are getting every year. See, 1 divided by क्या करना है? 1 divided by 1.1. That is 1 divided by 1.1 is equal to m plus. Is equal to m plus, is equal to, because every year you are getting the 50,000. Therefore, m plus m plus. How many times? 5 years. Therefore, m plus 5 times. And memory recall. It's very simple process. And 50,000 at the 40,000 at the end. So 1 divided by 1.1 is equal to only 5 times. Is equal to 5 times, because you don't want cumulative 40,000. 1-5 nahi hai. Only fifth year mein 40,000 hai. So you will take only is equal to. When you want cumulative, memory plus. Every year, memory plus. If you don't want cumulative, so is equal to. This is all for 10%, but your answer is 2,14,376. Now you want less answer. I want 2 lakhs. So मैंने discounting factor बढ़ा दिया. So from 10, I increase it to 15. Then my answer will be less than 214,376. I want 2 lakhs. So answer less, so discounting factor more. What is the logic? Answer less, discounting factor more. So take a break. ब्रेक में मिलेंगे. ब्रेक के बाद. So today's session बेटा थोड़ा सा मुश्किल है. मैथमेटिक्स है आज, तो करना पड़ेगा. So please enjoy this session. Yes, जल्दी से आ जाइए. Take a break of 15 minutes. 850 को आएंगे. 850 को आएंगे. चलिए. ओके. ब्रेक ले लीजिए.
Yes. Chalo. Let's start once again. Now, yes, one more time. Uh, yes, let's understand. Calculation of present value of inflows. Year 1-5 and 5th year. Cash flows, you're getting 50,000 every year and 40,000 GRV plus UGRV. Correct? Eh? Now discounting factor at the rate of 10%. Discounting factor at the rate of 10%. 1 divided by 1.1 is equal to M plus, 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 is equal to M plus. I'm getting the answer 3.7908. And 1 divided by 1.1, I'm getting the answer 0.6209. Discounted cash flows 189 540 24836. Discounting factor at the rate of 15%. If I take this total, I want 2 lakhs rupees. So discounting factor at the rate of 15%, 1 divided by 1.15 is equal to M plus, 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 is equal to M plus 5 times. Memory recall, I'm getting the answer 3.3522. 215 means to 2. And 1 divided by 1.15 5 times is equal to, okay. And what is discounted cash flow over here? 50,000 multiplied by 3.3522. 167,610. 40,000 into 0.4972. 187,498. See beta, I want 2 lakhs. If I take this difference, what is the difference? Yes, you can see here, my difference is 214,376 minus 187,498. So my difference is 26,878. What is the difference? 26,878. And this difference, I want only difference of 14,376. And my discounting factor difference, 5% discounting factor. If I increase, my values goes down by 26,878. So how to calculate IRR? Keeping 10% as base. Keeping 10% as base. I started with 10%. So 10% plus. If discounting factor increase by 5%, discounting factor increase by 5%,
My present value down by 26,878. My present value down by 26,878. And I want present value down by 14,376. So what is my discounting factor increased by? .67%. So final answer is 12.67%. 12.67%. Easy? .67% is the final answer. I hope you got the answer. Yes, tell me in the comment section, are you getting the concept? How to calculate? And this is called as internal rate of return. Let's prove it. If discounting factor is 12.67, approx rate, ये exact नहीं बोल सकते. Exactly you will get it on laptop. So discounting factor 12.67%. तो आपको मैं बताता हूँ ये 1 divided by 1.1267 is equal to m plus, yes, वापस एक बार 1 divided by 1.1267 is equal to m plus 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 3.5457 and 1 divided by 1.1267 1 2 3 4 5 5 times, so 0.5507 and discounted cash flow is 50,000 multiplied by 3.5457. I'm getting the answer 177,285 and 40,000 into 0.5507 22,028 approximately 2 lakhs का टोटल है 199,313 एग्जैक्ट नहीं पर यस ऑलमोस्ट 700 रुपए का डिफरेंस है. ओनली 700 डिफरेंस इन 2 lakhs इज ओके. एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, 700 रुपए का डिफरेंस है. सो अराउंड 2 lakhs. ओके, सो योर परसेंटेज आर आईसीआई ने कितना कंसिडर किया? 12.6%. So exact percentage is not possible due to rounding off. So 12.6 is the correct answer. So 12.60 they have considered. Institute ने कितना consider किया? 12.60. So this is how you have to do the calculation. Okay, you can take a screenshot if you want. आप screenshot ले सकते हो. IMP है, मैथमेटिक्स है, डोंट गिव अप. मुझे पता है यू कैन अंडरस्टैंड इट. वन मोर टाइम इफ यू सॉल्व इट, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, you can easily solve this. Okay, discounting means divide and divide means 1 divided by 1 point equal to m plus किया तो cumulative factor मिलेगा. only is equal to किया तो फिफ्थ ईयर का फैक्टर मिलेगा. you will get फिफ्थ ईयर. ओके, चलो बताओ कमेंट सेक्शन में, इजी और नॉट? इजी और नॉट? बेटा क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालना पड़ेगा. yes, yes, yes. If you have any query you can ask me. Don't use this equation and all, Zaida ji. It's very simple. So what is internal rate of return? If I invest, suppose if I invest 2 lakhs rupees, what is the meaning? If I invest today 2 lakhs rupees at 12.67%, then I will get every year 50,000 for 5 years, and in fifth year I'm getting 40,000. Every year I will get 50, 50, 50, 50, 50, and fifth year mein I will get 40,000. So my interest rate is 12.67%. So this is what called as
internal rate of return. This 12.67%. Understood? Okay. 2.67 beta. It's a cross multiplication. It's a cross multiplication. Take on calci. Cross multiplication. 14,376 into 5 divided by 26,878. 2.67. And 10 plus 2.67 is 12.67. देखो 5% से discounting factor if you increase, your answer goes down by 26,878. And I want answer 2 lakhs. I want answer 2 lakhs. So I want to go down by 14,376 only. Okay? थोड़ा complicated है. Yes, Avinash. It's simple. But it's for 5 times, no? It's for 5 times, Aisha. It for 5 years, so 5 times. 1 divided by 1.1267 is equal to, and is equal to. Then you will get this 5507. And how you get 3.5457 is equal to M plus, is equal to M plus, is equal to M plus. You are getting it at the end of 5th year, no? So 5 years का लेना पड़ेगा बेटा. Yes. Another query. Yes, your calculations, you can ask me. Very good, Parth. Very good, beta. No, beta, we are calculating exact interest rate. So interest rate, what we are calculating? Exact interest rate. Yes, beta. Ruturaj, very good. थोड़ा सा complicated मतलब you are doing it for the first time, so beta but obvious you will find this difficult one. Okay, what is the meaning of this? Meaning बहुत simple है कि आज मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मुझे हर साल 50,000 5 साल तक मिलेगा और 5th ईयर में 40,000 मिलेगा, तो मुझे कितना परसेंटेज रिटर्न मिला? 12.67%. और यदि बैंक इज गिविंग यू ओनली 8% रिटर्न, इज बेटर टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट. If another project gives you 20% return, so invest in that project. You can take a decision like this. Okay. So this is one of the decision factor, 12.67%. Okay. In financial management, in accounts, we are not bothering about this. Accounts mein sirf we calculate rate. In accounts, we only calculate rate. Okay. In accounts, we are not thinking ki kya hoga karke. ये रेट निकालना, what is the internal rate of return? To calculate this rate by using, if you do not have that interest rate given in the question, yes, interest is not given in the question, then beta you calculate using guess rate. आपको guess rate calculate करना है. So this is example 1. Okay. Example 1. Understood now? आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा निकालना है बेटा गेस रेट. सर इजी है, मैथमेटिक्स है पर इजी है. एक बार समझ में आया तो कैसे किया ये देखो, ये एकदम इजी. 10% से ये कैसे निकाला? 1 डिवाइड बाय 1.10 इज इक्वल टू m प्लस 5 टाइम्स. हियर 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, इज इक्वल टू नॉट m प्लस 5 टाइम्स. ये कैसे किया? 1 डिवाइड बाय 1.5 is equal to m plus 5 times is equal to 5 times. And then क्या किया? Difference between these two 26,878. Then difference between these two 5%. Yes, ये दोनों का difference, ये दोनों का difference 26,878. 5% discounting factor का difference. I want only 14,376. So if keeping discounting factor 10%, if increase by 5%, so value goes down by 26,878. I want value to be down by only 14,376, so 2.67.
ओके, ठीक है बेटा स्वाति, ईयर एंड देयर इज ओके, 700 300 500 रुपया इधर उधर चलेगा। ठीक है, 15% एज्यूम किया बेटा, 15% एज्यूम किया, 10%, 15% वी एज्यूम्ड इट। गेस गेस किया, गेस किया 10%, 9% से गेस किया 10%, और 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा टू गेट द लोअर आंसर। आंसर कितना आया? 214376। बट मुझे कितना आंसर चाहिए? 2 लाख। 2 लाख है तो एक और डिस्काउंटिंग फैक्टर गेस करना पड़ेगा 15%, और फिर हमने डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेना ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये स्टेप लास्ट वाला। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? टू गेट इंटरेस्ट रेट। हम लोग क्यों कर रहे हैं? टू गेट द इंटरेस्ट रेट। सी बेटा, इसमें देखो, एक्सेल जो होता है, एक्सेल, एक्सेल मतलब मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन, आप सबको ही पता होगा, एक्सेल तो दक्ष को भी पता है। एक्सेल में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यस, हाउ मच यू इन्वेस्टेड माइनस 2 lakhs, you invested 2 lakhs, okay? You are getting 50,000 in the first year. See, in 0 year you invested one. Second year में you are getting again 50,000. 50,000 in the second year. In the third year you are also getting 50,000. In fourth year you are getting again 50,000. And in fifth year you are getting 50,000 plus 40,000, 90,000. Okay. Suppose if I calculate IRR on, yes, values, hmm, hmm, गेस कितना करूं? हम्म, 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 हम्म। एक बार आज मैं ये फॉर्मूला, यस, एक बार चेक करता हूँ, आईआरआर आता है डायरेक्टली। एक ही मिनट ना बेटा। व्हाट इज गेस दैट आई डोंट अंडरस्टैंड?
ठीक है, एक बार चेक कर लूंगा। एक बार मैं देख लेता हूँ व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द आंसर। यस, इस पे क्यों नहीं आ रहा है। आई विल चेक इट, एक्सेल में भी डायरेक्टली विल गेट इट। ठीक है, एक्सेल में डायरेक्टली आता है। आई विल चेक इट एंड टेल यू। सो टिल नाउ एनी डिफिकल्टी बेटा? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक्सेल में आता है वो। आज मैं चेक करता हूँ। बेटा इन एक्सेल वी डू नॉट हैव टू टेक दैट वैल्यू। यस, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है उसमें। आई विल चेक एंड टेल यू टुमारो। चलो, बट दिस इज हाउ इन बुक, नोटबुक में यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस वे। ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, you can see here, ICAI consider 14% and 10%. Example 2, annual lease rent. Now see, this is how you calculated 12.67. तो हमने ऐसा लिया, annual lease rent 50,000, lease period 5 years, guaranteed residual value 25,000. UGRV don't consider for lessee. Now we are calculating lessee के angle से, lessee angle. UGRV we won't consider. And fair value is 2 lakhs. Internal rate of return is 12.6%. Now how to calculate? See, very simple. Very simple. Example 2 beta. Yes, you can write it afterwards. Example 1. You can take a screenshot of example 1. This is the answer. Don't write 12.67%. ये लिखने की जरूरत नहीं है. Don't need to write it. Okay. You can see just 10% and 15%. ठीक है? Now example 2. Example 2. Lessee records asset. I told you lower of present value of minimum lease payment, working note 1, or fair value. Now fair value is rupees 2 lakhs and present value of minimum lease payment we will calculate. So working note 1 after 2 lines, present value of minimum lease payment, year 1-5 and 5, cash flows, only GRV either. So only 25,000, not 40,000. Lessee considers only GRV. Discounting factor is given 12.60%. So take on calci, 1 divided by 1.126 is equal to M plus, is equal to M plus, is equal to M plus, is equal to M plus. वापस एक बार, 1 divided by 1.126 is equal to M plus, is equal to M plus, 4, 5, 3.5518 and 1 divided by 1.126 is equal to, is equal to, is equal to, is equal to, is equal to. I am getting 5 times ka 5525. So 50,000 into 3.5518, 177,590 discounted cash flow, and 25,000 into 0.5525, 13,812
1,91,403. 1,91,403. Whichever is lower. Let's check the answer. Let's check the answer. 191,403. Rounding of difference. Because I say consider 3 digits, I consider 4 digits. So example number 2, we are also getting the same answer. 191,403. Example 2. Over. So at what value you should record the asset? 191,403. Any difficulty? Chalo. Example 2, any difficulty? So we consider only GRV. We consider only GRV. Any difficulty till now? Lessor or lessee books? Yes, beta, it's given in the question. It's given in the question. Very good, beta. Some students has given you the technique. No. Madhav, no, beta. Yes. No, beta. The correct answer is 191,403. Answer 2, over. Answer 3. So asset account debit to lessor is in the books of lessee. It is given in the question. किसके books में? तो lessee के books में. हाँ. Now very important part. Now how to pass journal entries every year? See journal entries in the books of lessee. Yes. So books of lessee. See beta, year, principal sum outstanding at the beginning, interest at the rate of 12.60, repayment, and principal sum outstanding at the end. So how many columns you are going to prepare? Interest separately. So 1, 2, 3, 4, 5. 191,403. Okay. You calculated 50,000. 50,000. You repaid 50,000, 50,000, and at the end 75,000. Why? Because 50,000 plus 25,000 GRV. 191,403 take on calci into 12.6%. 24,116. Now see A column, B, C, D. B into 12.6%. And E is equal to B plus C minus D. One 165,520.
191,430 into 12.6%. Acha, so I will do it 7 minus 50,000. 165, 520. 12.6%. Again, 20,856 minus 50,000. 136,375 into minus 50,000. 103,559 into 12.6%. 13,048 plus is equal to minus 50,000. 66,607. 66,607 into 12.6%. देखो, here 8393, but we consider last में 0, so this is the balancing figure. So कितना आ रहा है balancing figure? 75,000. लास्ट में 0 चाहिए. सेम 8393. ओके, बट हाँ, तो यहां पे नो डिफरेंस, सेम टू सेम आया, सेम टू सेम. So 191,403 is the principal sum outstanding at the beginning. See how we calculated. 191,403 you got from example 2 into 12.6%. I will tell you the table. Take on calci 191,403 लिया. Yes, take on calci into 12.6%. Yes, you are getting 24,117. Then press plus is equal to. Then press on calci plus is equal to. You are getting 215,519.778. Every one of you. Minus 50,000. Minus 50,000 is repayment. Is equal to, you are getting 165,519.778 means 520. Now at the end will become at the beginning of second year. At the end of first year is second year ka beginning into 12.6%. 20855.49. So I consider 208,556. I consider 49 as 56. Okay. Plus is equal to and minus 50,000. I am getting the value 136,375.27, but I consider 136,376. Then at the beginning will become at the end of the second year, beginning of the third year, into 12.6%. 17,183. Yes, I am getting the same answer. Plus is equal to, and then minus 50,000. 103,559. Yes, 559. It's now matching. Then at the third year end, fourth year beginning, into 12.6%. 13,048 plus is equal to minus 50,000 is equal to 6660, 6.93. I will consider 07. And 66607 into 12.6%, 8393 I will consider, plus is equal to, I am getting exactly 74,999, that is 75,000. So I will consider 8393 at the end. Got the concept, beta? It's very simple. Into 12.6% plus is equal to, and then minus 50,000. Now what are the entries? Yes, Aisha, I already explained you the concept.
Yes. क्या होगा? Yes. Aisha, I hope you understood it. So what are the entries? Asset account debit. Asset account debit 191,403 to lessor 191,403. Year 0. Year 1, finance cost. Finance cost means interest, expenses, interest, expenditure debit. Okay. To whom you have to give it? To lessor. Lessor is your creditor. So creditor. Lessor का कितना क्रेडिट होगा? 24,117. This is a second year entry. And sorry, first year के end में entry. Lessor account debit to bank. How much you repaid? 50,000. So lessor becomes receiver. देखो उसका balance कम होगा. When we paid him, his balance is debited and bank balance goes out. 50,000. Depreciation, we are not aware. To asset, question mark. And P&L account debit to finance cost to depreciation. Finance cost is 24,117 and this is question mark. This is also question mark. Second year, year 2, same entries, 20,000, only amount will get differ, 20,856. Third year, 17,183. Payment is same, 50,000. And this is how institute recorded these entries. Finance cost to lessor, lessor to bank, and P&L to finance charge. Example 3 over. If borrowing rate is 10%, so we will discount at 10% and we will record 2,05,525 plus or 2 lakhs, whichever is lower, entry will be at 2 lakhs. Now you can do for others, but it is very simple now. You go with this illustration number 1. Okay. Now illustration 1, example 3 I solved. Now illustration number 1. Last question of the day, beta. Yes, ho gaya. Last 5 minutes. Over. Almost we are at the end. S Square Private Limited has taken machinery on finance lease. Lease term 4 years. Lease term 4 years. Fair value 20 lakhs. 6,25,000 is a lease rent. Guaranteed residual value and residual value 3,75,000. Implicit rate is given in the question, 15%. Calculate lease liability. Now lease liability means kiske books? Lease liability is lessee books. And disclose the impact. So liability means lessee. Asset for lessor, receivable. Liability means payable. So how to calculate this? How to calculate this? हाँ जी. See, I will consider only 1,25,000. Lease liabilities to confuse us. 3,75,000 to confuse us. We will consider only 6,25,000. Now, asset is recorded at lower of fair value. Fair value is 20 lakhs. And Roman 2, present value of minimum lease payment. Working note 1.
What are the columns? Cash flows, sorry, year, cash flows, discounting factor at the rate of 15% is given in the question, and discounted cash flow up to 1-4. 1-4. What is the cash flow? 6,25,000. And in fourth year, 1,25,000. Is equal to m plus, 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 is, sorry, 4 times. Sorry, it's my mistake. Again, 1 divided by 1.15 is equal to m plus 1, is equal to m plus 2, is equal to m plus 3, is equal to m plus 4. So this is memory recall. 2.8550. 497 means 50. And 1 divided by 1.15 is equal to 4 times. So 0.5718. Yes. Now you can multiply 6,25,000 into 2.8550. Memory plus 178. 17,84,375. And 1,25,000 into 57.5718. Memory plus 71. This is 185, 18 lakh 55,850. Whatever the total, 71,475. So 18 lakh 55,850 is the correct answer. Yes, I got the same answer. And when discounting factor are given in the question, you will take a total of this. So total इसकी ले लेना 0.8696 plus 0.7561, 0.6575 plus 0.5718. Okay, you can directly take 2.855 and 0.5718 is given in the question. If discounting factor given in the question, you will consider that only. Yes. Easy. Ilu 1. चलो, सो आज कंप्लीट करो होमवर्क. देन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेसॉर का एंगल है. नाउ आई वोंट टेल यू, यू ट्राई इट नाउ. अभी नहीं, आज मैं नहीं बताऊंगा आपको. यू ओनली ट्राई इट. यस, ठीक है. UGRV is also considered. UGRV is also considered here. Yes, 3 lakhs is expected. So you consider 1.6 is GRV and 1.4 UGRV. And when it is lessor angle, then you consider UGRV also. So next lecture में हम लोग देखेंगे. Till then, bye bye. Take care, बेटा. Please do it. Lease is not very difficult once you got the concept. वापस से lecture देखो, पूरा समझ में आ जाएगा. वापस से lecture देखो, पूरा समझ में आ जाएगा. Okay. Thank you, direct entry students. Foundation students, I don't think you need no need of this calculation once again because you solved it many times at foundation level. So till that, bye bye and take care, बेटा. Good day. आज morning में session हुआ. I'm very happy. Full day free रहेगा. Thank you.